हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एक लेकर के आए हैं जिसका नाम है लाइट। लाइट क्लास स्पेशली ये क्लास 10th के लिए है, क्योंकि लाइट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसका कंसेप्ट और इनका न्यूमेरिकल्स पार्ट बहुत आता है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो लाइट्स को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम लोग ये कहेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट इज a form of energy which gives us sensation of sight। तो हम लोगों को दिखता कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होता है, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख पर आता है। हम लोग डार्क सी ऑब्जेक्ट रूम पे अगर चले जाएंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे नहीं आ पाता है। देयरफॉर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट से हम लोग दो इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग देखेंगे, जो कि एक पार्ट है आपका रिफ्लेक्शन and second part is your refraction. So what is reflection? Reflection is bouncing back of light in the same medium. Say it is air, so incident light is reflecting back to air in the same medium. So such type of thing is called reflection. Bouncing back of light in the same medium is called reflection. There are two types of reflection. One is regular reflection. And the second part is irregular reflection. Irregular reflection. What is regular reflection and what is irregular reflection? See, telling you, or diffuse reflection. Irregular reflection is also called diffuse reflection. Suppose this is your plane surface and parallel beam of light is incident on this plane surface, then the reflected light will also be parallel to each other. Such type of reflection is called regular reflection. And this surface is uneven, and when parallel beam of light is incident on this surface, then such type of reflection, then the reflected rays are not parallel to each other. Then such type of reflection is called diffuse reflection or irregular reflection. So reflection means there are two things, important two things is there. One is incident ray of light and other one is reflected ray of light. So this is a incident ray of light and this is your reflected ray of light. If you draw a normal on the surface, right? So the angle between this incident ray of light and normal is your angle of incidence, and the angle between this normal and reflected ray is your angle of reflection. Then there are two laws of reflection. One says that incident ray, reflected ray and normal all lies in the same plane, and the second one is important, angle of incidence is equals to angle of reflection. So these are the two important laws of reflection. So now see, where we see reflection, this is your plane mirror, drawing dressing table, plane mirror, right? So in the plane mirror, when rays, suppose this is your object and this is your image. So what are the properties of the image formed by plane mirror? So there are such things, it is laterally inverted, the image is laterally inverted. Second, size of image is equals to size of object. Third, image distance is equals to object distance from where? From mirror. Image is virtual
and erect. So these are some properties of the image formed by plane mirror. So what are the uses of plane mirror? We can use it in dressing table and in periscope and in kaleidoscope. So these are the uses of plane mirror. Then come to the spherical mirror. Spherical mirror is very important. And in the one more thing, in the plane mirror, how many images are formed if the angle between the two plane mirror is theta? So angle of number of images is equals to 360 by theta minus 1. Right? So number of images formed between the two plane mirror is 360 degree by theta minus 1. So this is your, and now comes to spherical mirror. Why it is called spherical mirror? Say, this is your spherical mirror, or it seems to be a part of a sphere. If you draw like this, it seems to be a part of a sphere, therefore it is called spherical mirror. In a sphere, we know that there is a center. If it is a sphere, there must be a center. There, and if you draw an imaginary line from the center to this mirror, and if we say this as pole, and this is your center, is called center of curvature. Center of curvature, this curvature. And the distance between this center of curvature to mirror is radius of curvature. अगर हम लोग ये क्या है, तो लाइन ड्रॉन इमेजिनरी लाइन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर के इस मिरर पे स्ट्राइक करता है, then after reflection it passes through a point, that point is called principal focus. Right? So these are the point and the length between principal focus and the mirror is called focal length. Suppose your image object is here, so distance between object and the mirror is called object length, object distance. It is denoted by u. And if the image is from here, then the distance between image and the mirror is called image distance, and it is denoted by v, and focal length is denoted by f. So there are two types of spherical mirror. One is your convex mirror and another is concave mirror. There are two types of mirror. One is convex mirror, another is concave mirror. So the important part is this convex mirror, this is concave mirror, this is your concave mirror. The inner part, reflection from the inner part is your concave mirror, and from the reflection from the outer part is your convex mirror. Right? Now come to the point how to form an image. सपोज ये आपका कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर में आपको जैसे बताए, ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग एक रे ऑफ लाइट को इस तरह से प्लेन ले गए पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, प्रिंसिपल फोकस. और दूसरा रे ऑफ लाइट अगर मान लीजिए अगर ये यहां से फोकस से होकर भी गुजरा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन
it passes parallel to the principal axis। तो जिस जगह पे दो रे ऑफ लाइट मीट करता है, ये करता है, ये रियल इमेज बनाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर बना तो इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बना तो वो इरेक्ट इमेज बनेगा। तो ये आपका जो एक्चुअली रे ऑफ लाइट मीट करता है और इमेज बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। और जो मतलब अपीयर्स टू मीट होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे इसके पीछे अगर इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस फोकल लेंथ और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो आपका इमेज कैसा बनेगा, इमेज आपका वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल रिलेटिव साइड बनेगा। तो हम लोग उसको साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस को जहां पे हम लोग रखेंगे उसके अनुसार इमेज बनता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है आपका इसमें रे ऑफ लाइट जो आप ड्रॉ कीजिएगा तो इसमें कुछ पार्ट को ध्यान रखना है। एक तो जैसा आपको बताया, अगर मान लीजिए इसके पैरेलल जाएगा तो जिस पार्ट से पास करेगा उसको हम लोग कहते हैं फोकस। अगर मान लीजिए ये फोकस से पार होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट अगर इंसिडेंट होता है मिरर पे तो ये सेम पाथ से ये रिफ्लेक्ट होता है। तो इन सब बातों को हम लोग को ध्यान रखना होगा जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला। आप लोगों को बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एक टेबल बना हुआ होगा, कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जिसमें ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उनका प्रॉपर्टीज कहाँ बनेगा, उसको आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर रे डायग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला में जैसे आपको बताया एक फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। So just what is f? It is focal length. What is v? It is image distance. And what is u? It is object distance. तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। लेकिन इसमें ये है कि हम लोगों को v कब को पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, f को u को कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, इसको हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं। ये अगर मान लीजिए एक मिरर है, मिरर के इस तरफ को सारे को जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज बनेगा उसको निगेटिव लेना है और इस तरफ जो भी रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेना है। तो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्केव आपका मिरर हो या लेंस हो, और कॉन्वेक्स अगर मिरर हो या लेंस हो, दोनों ही के केस में साइन कन्वेंशन सेम होता है। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों ही के केस में हम लोगों को नेगेटिव लेना होता है। V माने इमेज डिस्टेंस, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के केस में V पॉजिटिव होगा। यानी कि इमेज डिस्टेंस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में इमेज डिस्टेंस अगर दिया रहेगा तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है। कॉन्केव मिरर अगर कॉन्केव लेंस अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दिया होगा तो v को इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव होना होगा, और अगर सॉल्व कर रहे हैं तो v को नेगेटिव आना चाहिए, तभी आप सही सॉल्व कर रहे हैं। f माने फोकल लेंथ को कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस में नेगेटिव लेना है, और यहाँ पे फोकल लेंथ को आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन है, इसके अनुसार हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और v को, u को, f को हम लोग इस तरह से वैल्यू लेंगे और सॉल्व करेंगे, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों का सॉल्व हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक और फॉर्मूला जो हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हम लोग देखेंगे, मैग्निफिकेशन मतलब m से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कैसे, इसके साथ प्रॉपर्टी को कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मिरर के केस में माइनस v बाय u। v मतलब क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस,
U मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। तो इससे हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हाइट ऑफ इमेज या मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस आ गया देन इमेज विल बी इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये इसको हमको याद रखना होगा, ये इसके अनुसार हम लोग बता सकते हैं। कभी क्वेश्चन आता न्यूमेरिकल में, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड से हाउ व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, तो हम लोगों को इसके अनुसार इमेज का प्रॉपर्टीज को बताना पड़ेगा। ये हो गया मिरर का पार्ट। अब हम लोग आते हैं लेंस में। मिरर की तरह ही लेंस दो तरह का होता है। व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज कॉनकेव लेंस। तो लेंस जब होता है ये मिरर की तरह लाइट एक ही मीडियम में नहीं आता। यहां पे क्या होता है, लाइट क्रॉस करते हुए ग्लास में, ये दिस इज योर एयर एंड दिस इज योर ग्लास, सो लाइट इज क्रॉसिंग टू one medium to another medium, right? So when in this case, when ray of light transfers from one medium to another medium, it deviates from its path. So such type of thing is called reflection. So refraction में क्या होता है, light travels from one medium to another medium, and while traveling from one medium to another medium, it bends from its path. Suppose let us take the example of glass slab first. Suppose this is your glass slab, right? And this is the incident ray. Then this will be angle of incidence. Then after reflection, this is your air, no? And this is your glass. So this is rarer medium, and this is denser medium. So when light travels from rarer medium to denser medium, air to glass, it bends towards normal, and again when it travels from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal. This is your refraction. That means light is traveling from one medium to another medium. Like reflection, there are two laws of refraction also. One is incident ray, refracted ray, and normal, all lies in the same plane as in the refraction. And second one is important, sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant. It is denoted by mu, and this is called Snell's law. This is called as a ratio of sine of angle of incidence by sine of angle of refraction is constant. It is denoted by mu, and this mu is called refractive index. And this law is called Snell's law, right? This is your second law of refraction. Mu is refractive index of the material is given by speed of light in first medium by speed of light in second medium. If the first medium is your vacuum, then the formula will be C by V. C means 3 into 10 to the power 8 meter per second. So directly you can solve the Wheeler speed of the light in the second medium or refractive index. Whatever is given, you can solve the other part. So this is your refraction, and in the case of lens, refraction occurs. So we'll see how images will be formed, what will be the properties of the images, right? So in the reflection, in the case of mirror,
two mirrors are there. One is concave mirror. What are the uses of concave mirror? When we need to see small object larger. So dentist use it. Shaving mirror is also sometimes of concave mirror. Headlight, and the headlight also concave mirrors are used. And convex mirror, where it is used? It is used where we need to see large portion of the object, that is in rear view mirror. Rear view mirror in vehicle, in car or bike. Rear view mirror, this is the use of concave mirror and convex mirror. Now come to lens. Like mirror, there are two types of lens. One is convex lens. Convex lens is like this, and second is it is broader in the middle and narrower at the upper part and lower part. Then concave mirror, concave lens, this is like this, it is narrower in the middle. So this is also called, suppose this is your convex lens and this is your principal axis, this is your optical center, this is your principal axis, right? And this say is your object, and if a light comes to this lens, then after passing through this lens, it converges to a point that is called principal focus. As the ray of light converging to a point, so this lens is also called converging lens. Then the second is your concave lens. Similarly, if a ray comes to this concave lens, then after passing through this lens, it diverges from here. So therefore, this lens is called diverging lens. Right? So this is your converging lens and this is your diverging lens. Then come to mirror lens formula. This is your 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. 1 by v minus 1 by u. So this is your lens formula. Otherwise everything is same. F is focal length, v is image distance, u is object distance, right? So magnification, what is the formula of magnification? M is equals to height of image by height of object is equals to plus b by u. In the case of mirror, it was minus b by u. So height of image by height of object equals to plus b by. Sign convention will be same. If it is convex, if it is concave lens and it is convex lens, in concave lens u is negative, v is negative, f is negative, and convex u is negative, v is positive, and f is positive. So this will help you solving numericals related to lens, right? And this will give you property. Again I am telling you, if m is positive, then image will be virtual and erect. And if m is negative,
image will be, yes, real and inverted. So this is the, if the now comes, if m is, the value of m is less than 1. If it is less than 1, that means height of image will be diminished. That means it is shorter than the height of the object. If it is m is equals to 1, then image height is equals to object's height. If m is greater than 1, then image height is magnified. That means it is larger than the height of the object. So this is all about mirror and lens and light chapter. So important part is you will practice all the formulas, sign convention, and the table, important, that table where the image will form and what will be the properties of the image and ray diagram, right? So one more important thing is power of lens. Power of lens, P, it is in diopter, capital D, the unit is diopter, is equals to 1 by focal length. It is always in meter. Remember, na? This will be in meter. So power of lens is inversely proportional to focal length. As a, if power is positive, then virtual and erect, and power is negative, then real and inverted. Right? Accordingly we will use lens. So I think आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस करना है और कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, टेबल को लर्न करना जरूरी है और उसके साथ रे डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और इसमें स्कोर करना बहुत जरूरी है, इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनसीईआरटी बुक से और भी सपोर्टिंग बुक से बनाइए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, हमको पूरा उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छा से एग्जाम दीजिएगा।